में लाता है जिन्हें लंबे समय तक हाशिए पर रखा गया था, लेकिन जिन्होंने अपने साहस और सृजनशीलता से एक नई पहचान गढ़ी है। कहानियों, कविताओं और अनुभवों के माध्यम से हम केवल रचनाओं से नहीं बल्कि जीवन की उन परतों से रूबरू होंगे जो हमें समझ, संवेदना और संवाद की ओर ले जाती हैं। We are delighted to have Kalki Subramaniam to moderate this session. May I request her to join us on the dais, please? Kalki is a renowned transgender rights activist, writer, visual artist, and poet. She is the founder of the Sahodari Foundation, an organization dedicated to empowering transgender persons. A powerful public speaker, Kalki is the author of 3 acclaimed books, We Are Not the Others, and 2 books in Tamil. Her writings have been included in academic curricula across India and published in international literary journals. Her poetry has also been translated into German. For her contributions to activism, art, and literature, Kalki has received several awards and accolades. May I also invite to the dais Shri Dibyajyoti Sharma, who is a writer and editor with an extensive body of work. A big round of applause for Dibyajyoti. He has published 3 poetry collections, 4 translated books, and 2 academic works, along with numerous short stories and articles in journals. He works as a journalist and runs the micro-independent publishing venture Red River, contributing significantly to contemporary literary discourse. Last but not least, Sadhna Mishra. Sadhna is a transgender human rights crusader who demands no special reservation for transgenders, but wants an equal space in the mainstream, and rightly so. She currently serves as a social officer at KIMS Hospital, Bhubaneswar. She is the co-founder of Sakha and works actively towards transgender rights and social integration. Kindly join us on the dais, please, Sadhna. Sanjana. Sadhna is not here. And Sanjana Simon, who is an emerging transgender writer. Sanjana writes extensively on issues concerning the transgender community. She has a special interest in Shringar Ras and writes in both Hindi and English. With over 150 poems and 5 short stories to her credit, she brings a passionate and evolving voice to contemporary literature. She is currently the chairperson and director of the trust Love Thy Neighbor, working for the welfare of the transgender community. She was awarded a doctorate in theology in 2023. May I request Kalki Subramaniam to moderate this session and take the mic from me. Okay. Good afternoon, everyone. Elorukum Enudia Vanakkam. I'm really honored to be moderating this session. It was supposed to be with many writers, but unfortunately, a couple of them could not come. However, I think Dibyajyoti is here, Sanjana is here. So we are going to do a beautiful event this afternoon, talking about LGBTQI literature in the 21st century. Particularly on a national context. Is it working? It's not working. Yeah, now it is. Literature on the international context and the Indian context.
But let's talk more about the Indian perspectives. Particularly when we talk about the 21st century literature, I would say the literature movement had a very important effect, very, very important effect in changing the social perspectives of the civil society. Not just that, writers from the transgender community, queer LGBTQI community, have done a greater contribution in changing the landscape of LGBTQI rights in our country. Particularly if you talk about transgender rights, then obviously we can say 21st century's transgender writers have done a tremendous job for upholding the rights not just of the trans people but also of the entire LGBTQI spectrum. Among the entire LGBTQI spectrum, if you take the transgender community as the one that is more affected, also one of the most poorest communities in the entire LGBTQI system, the spectrum. We need our voices to be amplified more. We need our voices to be heard. And unfortunately, majority of our community is not educated. They're not educated. More than 90%, I would say more than 80%, yes. More than 80% of our transgender community people cannot read, cannot write, because right from a young age, they have been pushed out of their homes, rejected, never had the opportunity to study in a proper school, also go to a college because of the existing stigma and discrimination that prevails in the society. If you today, most of you might have seen in the signals a trans woman, a hijra or a kinnar begging, and you would have wondered why are they begging? Do they have a family? Yes, definitely. They were born to a mother, and the mother had dreams. So did the sibling had dreams, and this gender non-conforming child also had dreams. Nobody is born to beg. Nobody is born to be sexually exploited. But unfortunately, the rigid roles that we have through our cultural, religious, and traditional practices of seeing feminineness and womanhood as an inferior thing than the masculinity, that toxic perspective led to the denial of a man, a person born as a man, when they transition into a woman. This perspective has made them inferior in the perspective of the larger society. This travel from one gender to the other is not recognized by our society. We are struggling hard, going 10 steps forward, but again, 20 steps backward. Fighting for 10 steps forward, 20 steps backward. This has been a long struggle for the transgender community. But when we talk about literature, around the world, books, particularly literature, have played such an important effect on our human civilization. When we talk about literature, I'm also talking about Bhagavad Gita. I'm talking about Bible. I'm talking about Quran. I'm talking about Karl Marx, Das Kapital. What kind of an effect does it have? These are all literature. We cannot just dismiss them as religious books or, communist theory. They are literature, and they have had huge, huge impacts. Change the country's borders and landscapes, and it has created huge change in the history and thought and civilization of our community. On that perspective, LGBTQI writers have a greater role to play when it comes to social transformation. And India's first book by a transgender author was by Revati Amma, A. Revati. Yes. She was the first person to bring a book in Tamil called Unarvum Uruvamum. It was a compilation of experiences, of stories from the transgender community. That was the first ever book
written by a trans woman. Before that, there have been a lot of books and periodicals like Bombay Dost and so many other periodicals and magazines have been there. But nobody talked about trans lives. Nobody talked about trans lives much. And that was the time when in Tamil Nadu, because of the movement that was happening, because of the different leaders that we had for a very long time, their thoughts provoked gender equality. You can be a man, you can be a woman, you can be anything, but you are equal. That was the rational thinking, and that led to the revolutionary liberation of the transgender community in Tamil Nadu as well. So Revati Amma's book had a huge impact. It has been translated into many languages. And apart from that, Living Smile Vidya wrote the second book, and the first poetry collection, Kuri Aruthen, was from me. And then Lakshmi Narayan Tripathi ji has written a book, 2 books in fact. The Red Lipstick and what was the other one? Me Hijra, Me Lakshmi. Yes, Me Lakshmi, Me Hijra. And Manavi Bandyopadhyay has written a book. So beyond books, many poets, many writers, many essayers, many academicians have done so much of work in literature. Devika has written, Sanjana has written, Chandni has written, so many of us here. We have all contributed to our rich literature in our own languages, and some of us also in English. And do you think that doesn't create an impact? Definitely it creates an impact. It creates an impact in the universities, in academic circles, and everywhere it creates an impact. And I think in Tamil Nadu, if you take Tamil Nadu, one film changed the states, one movie, one film, feature film, changed the political atmosphere. A movie named Parasakti, the writer was Karunanidhi, the ex-chief minister of Tamil Nadu. He was just a screenwriter at that time. The movie spoke about gender equality. It spoke about the existing corruption in the judicial system. It spoke about political corruption. It also spoke about women's rights. A lot of things it spoke about. And that movie made a huge impact, and that writer became very popular. He was a politician, then later he became an opposition leader, and then later he became the chief minister. He was the person also responsible, Mr. Karunanidhi, we call him Muttamil Aringar Kalingar Karunanidhi. He was the person who was responsible for removing the word Ali, Onbadu and all that, removing the word Aravani and giving a respectable name called Tirunangai. Tirunangai in Tamil means respectable woman. Nowhere in the world a transgender woman was named so beautifully, so respectfully. Tirunangai and Tirunambi for trans men. So the regional identities are so important. Whereas in Tamil Nadu, Tirunangai and Tirunambi, in Manipur, in places like Manipur and Northeast, where there is no representation or less representation, among the tribes which have existed forever, they have the recognition for transgender people, and it is Nupa Manba and Nupi Manbi for trans men and trans women. So trans people didn't come all of a sudden. We have always existed, not just among humans, but also among species, in plants, in trees, in birds, in animals, and in little insects and creatures. These variations of gender, variations of sexuality exist. And the evolution, the earth and the evolution, everything has been accommodating each other. Everyone has been living together. Nature has accommodated everything. Nobody denies others' existence. But unfortunately, we humans, even though we are one of the brightest intellectuals, we claim in the entire species on earth, we also are one of the most vicious kind. We are also one of the most vicious kind. So 21st century writers have done tremendous contributions.
And we are going to talk today about that. And I'm proud to invite Sanjana Simon first. She has been introduced by our host. And I request her to start with her beautiful poetry and then talk about her literature. आप सभी लोगों को प्रणाम। साहित्य अकादमी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मौका दिया। हम सब लोगों को फिर से आमंत्रित किया गया है हमारी मर चुकी आवाज़ को दोबारा से सुनने का आप लोगों में जज्बा है, आप लोगों में हौसला है। तारीफ़ करती हूँ साहित्य अकादमी की पुनः कि आपने इतना खूबसूरत आयोजन किया और आप लोग हमें नहीं भूलते हैं, इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आदरणीय कल की दीदी ने कहा कि हम लोगों की आवाज़ सुनी ही नहीं जाती है और बहुत अरसे से कोशिश करी जा रही है, कुछ कुछ लिख के आप लोगों तक प्रयास किया जा रहा है कि बात पहुंचाई जाए, लेकिन अभी भी शायद लेख तो आ गए हैं, लेखनी आ गई है, लेकिन पढ़ने वाले अभी शायद मौजूद नहीं हैं। देखिए, किताबों का वजूद नहीं होता है अगर पाठक ना हो। हम लिख दे लेकिन उसको कोई पढ़े ना तो वो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है उसका। तो मैं आप लोगों को इनकरेज करना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ पढ़िए। बुक्स अवेलेबल है, आप लोग इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं, आप लोग परचेज़ करके पढ़ सकते हैं। आप लोग पढ़िए ताकि आप लोग हमें और मोटिवेट कर सके, हमें बता सके कि कहाँ पे क्या त्रुटि है और कहाँ पे क्या अच्छा है। जैसे टॉपिक के बारे में बात करूँ मैं, तो मैंने ये महसूस करा एज अ पर्सन, एज अ ट्रांसजेंडर पर्सन, मैंने ये महसूस करा कि पहले जो लेख आते थे, पहले जो कहानियाँ आती थी, उसमें बहुत सारी मिलावट होती थी, क्योंकि हमारे जीवन को देख के कोई दूसरा व्यक्ति लिखता था। तो ट्रांसजेंडर कौन है, क्या सोचते हैं, कैसे होते हैं, उसको लिखने की जो भाषा थी वो बहुत अलग थी। लोगों ने अपने परसेप्शन के हिसाब से हमें डिफाइन कर दिया, जैसा उनको लगता था वो हमारे बारे में लिख दिया करते थे। कभी कभी तो हम लोग बिना बोले भी बहुत कुछ बोल जाते हैं, कभी कभी हमारे आंसू बहुत कुछ बोल जाते हैं, कभी कभी चुप्पी बोल जाती है, कभी कभी हमारी चिल्लाहट बोल जाती है। अगर मैं सड़क में खड़े होकर 2 ताली बजा दूं तो मैं बताना चाहती हूँ कि वो भी अपने आप में एक लेखनी है, उसमें भी दर्द छिपा है, उसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। तो हम चलते फिरते खुद ही एक किताब है और इसको बहुत सारे लोगों ने पढ़ा और तरह तरह से लिखा। कुछ मिथ्ये भी लिखे, कुछ पाठकों को लुभाने के लिए रोचक बातें भी मनगढ़ंत लिख दी गई। लेकिन भला हो कि जब रेवती अम्मा या कल की दीदी या दीदी बैठी हुई हैं, तो आप सब लोग यहाँ पे जब लिखना शुरू करा, और हमने तो खैर पढ़ के ही आप लोग को पढ़ा, आप लोग को सुना, फिर खुद में भी आया ये कि भाई हम भी लिखें, हम भी लिख सकते हैं। और जब आप लोगों को पढ़ा तो समझ में आया कि हाँ, वो दर्द जो अब तक छिपा हुआ था, साहित्य से कहीं दूर था, वो अब धीरे धीरे परोसा जा रहा है। जब ट्रांसजेंडर व्यक्ति ने अपनी व्यथा खुद बतानी शुरू करी तो उसमें वो आह भी थी, वो प्रेम भी था, बिछड़ना भी था, मिलना भी था, सब कुछ था। हमारे ऊपर रोचक बातों को लिख दिया जाता है, हमारे ऊपर कभी कभी बहुत मिथ्य बातों को लिख दिया जाता है। जैसे मैं छोटी थी तो पढ़ती थी कि कोई किन्नर मर जाता है तो जूतों से मार के उसको दफनाते हैं, गड्ढा खोद के उसको खड़ा दफना देते हैं, और बड़े अजीब अजीब से मतलब बातें सुनते थे और खुद बड़ा डर लगता था कि यार हम भी ऐसे ही मरेंगे क्या, जब हम मर जाएंगे तो हमें भी जूते मारेंगे लोग और हमें मतलब इतना नकारा और निकम्मा समझ के संसार से भगा दिया जाएगा। मतलब बहुत कुछ ऐसा था जो हकीकत में नहीं होता है। जब हम खुद इस जीवन को जी रहे हैं, अपने सत्य को स्वीकार करके एज अ ट्रांसजेंडर पर्सन हम सामने आए हैं, बेशक हमें बहिष्कार कर दिया गया है समाज से, परिवार से, लेकिन अब हम अपना सत्य आपके सामने रख सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। हम भी इंसान हैं, हमारे भी हड्डी मांस बिल्कुल आप जैसा है, सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल आप जैसी है, प्रेम करने की शक्ति भी बिल्कुल आप जैसी है, हम बिल्कुल आप जैसे हैं। हमें अपने से भिन्न मत समझिए, हमें अपने से अलग समझ के अगर आप हमें जानने की कोशिश करेंगे तो आप कुछ भी नहीं जान पाएंगे। हम सब इंसान हैं, हमारी भूख भी वैसी है, हमारी प्यास भी वैसी है,
हमें भी वैसी प्रेम चाहिए, वैसी ही इज्जत चाहिए, एक्नॉलेजमेंट चाहिए, रिकग्निशन चाहिए, सब कुछ वही चाहिए जो आपको चाहिए। हम ट्रांसजेंडर एडवोकेसी की बातें करते हैं, अपने अधिकारों की बातें करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इंसानों के बीच में बैठ के कोई एक इंसान अगर अपने अधिकारों की बात कर रहा है तो शायद ये अपने आप में बड़ा ही छोटा और अपूर्ण समाज है। मतलब अगर मैं आपसे बोल रही हूँ कि मुझे प्यार चाहिए, मुझे इज्जत चाहिए, मुझे 2 वक्त की रोटी चाहिए, या मुझे प्यार की निगाहों से देख लीजिए, तो मुझे लगता है ये वही चीज़ है जो आपको भी चाहिए। कुछ नया, कुछ अनोखा हम आपसे नहीं मांग रहे हैं, बस वो मांग रहे हैं कि आप उस निगाह से देखिए कि हम भी इंसान हैं, हम भी आपके जैसे हैं। तो मैं इस टॉपिक के बारे में यही बोलना चाहूँगी कि पहले बहुत कुछ लिख दिया जाता था, लेकिन अभी बहुत कुछ रोचक लिखा जा रहा है, बहुत कलात्मक लिखा जा रहा है। हम लोग अपनी जीवनी को उन्हीं शब्दों के माध्यम से परोस रहे हैं जैसा कि हम महसूस करते हैं। अगर प्रेम में हमारे साथ छल हो रहा है तो हम लिखते हैं कि यहाँ छले गए हैं। अगर प्रेम में किसी ने मोहब्बत के नाम से हमारा रेप किया है तो हम कहेंगे कि हाँ, हमारा रेप किया गया है। अभी मसला ये नहीं बनता है कि आपका शरीर कैसा है जो आपका रेप किया गया है, कभी कभी तो आत्मा का भी रेप हो जाता है। कोई इतना करीब आके धोखा दे जाता है कि लगता है शरीर का क्या पीड़ा होती है जो आत्मा दुखा के कोई चला गया। हर चीज़ बिल्कुल वैसी है, लेकिन अब इस युग में सत्य जो है वो नंगा होकर आपके सामने रखा गया है, और सत्य जब नंगा होता है तो मुझे लगता है सबसे खूबसूरत होता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई झूठ की परत नहीं होती है। अब इस सदी में जबकि ट्रांसजेंडर व्यक्ति लोग खुद प्रोत्साहित होके आगे आ रहे हैं, अपने सत्य को स्वीकार कर रहे हैं, तो सचमुच में वो बातों को आपके सामने रख रहे हैं। और आप इस बात को तब समझ पाएंगे जब आप उनकी किताबों को पढ़ेंगे, आप उनकी लेखनी को पढ़ेंगे। महज 5 मिनट सुन के आप किसी के मर्म को शायद ना समझ पाए, लेकिन जब आप उसको एक कथा में, एक कहानी में, एक कविता में पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छी तरीके से उसको समझ पाएंगे, उसके साथ न्याय कर पाएंगे। किन्नर विमर्श जो होता है या LGBTQ कम्युनिटी का अपना जो साहित्य है, वो अपने आप में एक पूरी दुनिया को समेटे रहता है। वो दुनिया उसके पैदा होने से उसके मरण तक होती है, सभी चरण उसमें आप देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना ज़रूरी है, और ज़रूर से पढ़िएगा ताकि हम लोग और लिख सके, हम लोग को प्रोत्साहन मिल सके कि हाँ, हम लोगों को सुना जा रहा है और हम लोगों को पढ़ा जा रहा है। जैसे दीदी ने बोला कि कुछ कविताएं मैं आप लोगों के सामने रखूं, और मेरा सौभाग्य है कि मैं साहित्य अकादमी के मतलब मेरा तो सपना होता है हमेशा साहित्य अकादमी में आके पढ़ने का, तो मैं इतनी प्यारी जगह पे आके पढ़ रही हूँ। एक कविता है जो मैंने अभी कुछ समय पहले ही लिखी थी। कुछ लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही थी, और हमारी ज़िंदगी में जो प्यार होता है ना, वो बहुत तकलीफ़ भरा होता है। जब कोई इंसान हमसे ये बोलता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, देखिए मैं श्रृंगार रस में लिखती हूँ तो उसी के साथ शुरू कर रही हूँ। तो जब कोई ये बोलता है कि वो हमसे मोहब्बत करता है तो उसमें कहीं दबा हुआ धोखा जो होता है वो साथ साथ चलता है, क्योंकि ये ऐसी मोहब्बत होती है जो अपने साथ में धोखे का खंजर लिए चलती है। और हम इतने मतलब बेवकूफ़ होते हैं, या कह सकते हैं कि प्रेम में इतने लाचार होते हैं, या प्रेम से इतने वंचित होते हैं कि हमें पता है कि ये प्रेम जो है ये अपाहिज सा गिरता पड़ता हाथ में धोखे का खंजर लिए हमारे पास आ रहा है, और हम फिर भी उसको स्वीकार कर लेते हैं। हमें पता होता है कि क्या होने वाला है अब नेक्स्ट हमारे साथ में, लेकिन उसके बावजूद हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि सचमुच में हम प्रेम से वंचित लोग हैं। हम बचपन से तरसते हैं प्रेम करने के लिए कि कोई हमसे प्रेम कर ले, कोई हमें इस लायक तो समझे कि हमसे प्रेम किया जा सकता है। देखने वाला सब कुछ देख लेता है, शायद खूबसूरत बाल देख सकता है, रंग देख सकता है, साड़ी देख सकता है, पहनने का तरीका देख सकता है, सलीका देख सकता है, भाषा देख सकता है, लेकिन देखने वाला अगर यही ना देखे कि मैं एक इंसान हूँ और मेरे पास दिल है, तो शायद उसने कुछ भी नहीं देखा। सबसे पहली बात तो यही है कि मैं एक इंसान हूँ, आप जैसे इंसान हूँ। ये धोखा उतना ही प्रताड़ित मुझे भी कर जाएगा जितना वो आपको कर सकता है। तो कुछ उसी बात के लिए लिखा था मैंने। तुम कितना आसानी से निकल जाते हो, तुम कितना आसानी से निकल जाते हो, खुद की कही हर बात भूल जाते हो, पर मैं वही ठहर जाती हूँ, तुमको, तुम्हारी यादों को भुला नहीं पाती हूँ। तुम जिंदगी में प्रवाह चाहते हो, बहना, उड़ना, नई मंजिल, नए लोग चुनते हो, पर मैं
मैं तुम्हें पाके अब कहीं और नहीं जा पाती हूँ। तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना चुकी हूँ। तुम समझते हो यही सत्य है, सहज है, सरल है। मैं तुम्हारी बातों का मतलब समझ नहीं पाती हूँ। कैसे कोई किसी का साथ छोड़ सकता है? कैसे ज़िंदगी को एक नए मोड़ पर हंसता चला सकता है? क्या यादें सिर्फ मेरे ही मन में हैं? तुम्हारा मन क्यों इतना आज़ाद हो जाता है? प्यार तो दोनों ने किया था, कोई ज़बरदस्ती या मजबूरी नहीं थी, साथ दोनों ही चल रहे थे। फिर तुम नई सोच के साथ आगे बढ़ गए। मैं वहीं खड़ी रह गई जहाँ से तुम अलग हुए थे। मेरे पास जीने को सिर्फ तुम्हारी यादें हैं। तुम्हारे पास सब है सिवाय मेरी यादों के। तुम मुझे भूल गए जैसे कोई लाश दफना दी हो। तुम मुझे भूल गए जैसे कोई लाश दफना दी हो, प्यार को राख सा गंगा में बहा दिया हो, कर दिया हो कोई अंतिम पिंडदान जहां से अब तुम मुक्त हो। अपनी जिंदगी को नए तरीके से, नए लोगों के साथ, पर जिसे तुम मरा समझकर दफना गए थे, वो लाश सांस लेती है आज भी। पर जिसे तुम मरा समझकर दफना गए थे, वो लाश सांस लेती है आज भी। वो राख गंगा में बही नहीं, बल्कि किनारे लगकर एक पौधे को सींच रही है, जिसमें से प्रेम के फूल निकल रहे हैं। खुशबू उन फूलों की तुम्हारे हर पिंडदान के ऊपर भारी है। तुम आज़ाद हुए ताकि फिर जी सको। तुम आज़ाद हुए ताकि फिर जी सको। मैं कैद में तो हूँ, पर अब मरने का खौफ नहीं। मैं अब कैद में तो हूँ, पर अब मरने का खौफ नहीं। मैं अभी भी ज़िंदा हूँ और तुम्हें खुद में ज़िंदा रखती हूँ। मेरी हर सांस में तुम सांस लेते हो। भला तुम्हें मैं कैसे भुला देती? प्यार का पहला सबक मुझे आज भी याद है। मैं तुम्हारे मौन का शब्द हूँ। मैं तुम्हारे हर बोझ से मुक्ति हूँ। मैं तुम्हारी जैसी ही तो हूँ। ना जाने कितनी दफ़ा तुमने मुझे अपनी कहा था। मैं आज भी उस सत्य में सहज हूँ जिसे तुम सत्य अघोषित कर चुके हो। शुक्रिया। एक और कोशिश करती हूँ, शायद पसंद आए आप लोगों को। अपना दर्द किस तरह से बयां करूँ? अपना दर्द किस तरह से बयां करूँ? अपने जख्म तुम्हें कैसे नज़र करूँ? इंसान हूँ रूह की जात से, बनी हड्डी मांस लहू और मोहब्बत से शुरू। इंसान हूँ रूह की जात से, बनी हड्डी मांस लहू और मोहब्बत से शुरू। मर्द और औरत का सबूत तो ना दे सकूंगी। मर्द और औरत का सबूत तो ना दे सकूंगी। मैं खुद की शिनाख्त पर थोड़ी सी बेजुबान होकर मरूं। पर हाँ, ये पता है इंसान ही हूँ तुम्हारी तरह। अपनी ख्वाहिशों को सिसकियों की ज़ुबां कैसे करूं? कि मैं भी हूँ इस दुनिया का एक अनमोल हिस्सा। क्यों खुद को खुदा की बनाई कायनात से जुदा करूं? जीना हम भी चाहते हैं खुश होकर सुकून से। तुम्हें कलाम में लिखी मोहब्बत की हिदायत कैसे पेश करूं? इबादत करता है तू अनदेखे खुदा की रोज़। इबादत करता है तू अनदेखे खुदा की रोज़। जो जिंदा इंसान में खुदा को देख सके, वो आंखें कैसे नज़र करूं? तुझे रोज़ नियत वज़ू गुस्ल की ज़रूरत पड़ती है। तुझे रोज़ नियत वज़ू गुस्ल की ज़रूरत पड़ती है। तू पानी से पाक होता है रोज़। मैं पापिन ही सही, पानी से नहीं, रो रो के आंसुओं से खुद को पाक करती हूँ। मैं तो तौबा में पाकीज़ा हूँ, तुझे खुमार और घमंड से कैसे पाक करूँ? मैं तो तौबा में ही पाकीज़ा हूँ, तुझे खुमार और घमंड से कैसे पाक करूं? तेरे जिस्म में भी फूकी तेरे खुदा ने खुद की सांसें। तेरे जिस्म में फूकी खुदा ने अपनी सांसें। मेरे जिस्म में भी फूकी तेरे खुदा ने अपनी सांसें।
तुम्हें कलाम पढ़कर भी इंसान से मोहब्बत समझ नहीं आती। अरे आदम, इस नादानी को मैं क्या नाम दूं? अरे आदम, इस नादानी को मैं क्या नाम दूं? कि रब ने बनाया मुझे भी नबियों की शक्ल में, कि रब ने बनाया मुझे भी नबियों की शक्ल में। उस पाक अक्स को देख सको तो मैं ये अक्ल कहाँ से दूं? उस पाक अक्स को देख सको ये अक्ल तुम्हें कैसे दूं? देख लेते हो लालची और घमंड से चूर अंधी निगाहों से, देख लेते हो लालची और घमंड से चूर अंधी निगाहों से मेरे अधूरे हिजड़ा जिस्म को। देख लेते हो लालची और घमंड से चूर अंधी निगाहों से मेरे अधूरे हिजड़ा जिस्म को। मैं एक मजलूम मजबूर अधूरी पर एक अच्छी इंसान हूँ, ये देख सको वो चश्मा तुम्हें कैसे पेश करूं। एक इंग्लिश में भी लिखी थी, कोशिश करती हूँ। द टाइम है, आई कैन स्पीक। आई एम अ वुमन without ovary, uterus, and menstruation. Here comes a new version of a new woman. Yes, I am a woman. Now, absolutely authentic and pure, wearing saris, which I always wanted to wear. This makeup is garland to the lady I carry in me, wearing bangles now showing my power. These two black eyes are a room where I can lock you. These two black eyes are a room where I can lock you. Lips that create magic. Passing love I have for me. Look at my long brown hair. A chain of events I celebrate being a woman. This bindi is symbolic of divine wisdom. This gives me courage to speak the truth. I wonder how beautiful I have become. I wonder how beautiful I have become from when I started being real. Once, I was a sad and depressed person, confined in boxes of gender. I was identified as a male that I even never was. I was identified as a male that I even never was. I was brought up by the norms of society, rules, regulations, law, gender, and all. I, as a person, was not alive in that wrong body. The day I revealed real me, trapped in me to the society, though I was rejected and discriminated, and later felt I'm unwanted and unloved, but now I'm happy as a woman, showing my real color. I'm pretty and beautiful, not because I look good, but surely for my being originally authentic and a real woman. Yes, I am a new version of a real woman. अभी रिसेंटली सरकार ने ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन बिल 2026 भी पास कर दिया है, राष्ट्रपति महोदया ने उसमें साइन भी कर दिए है। ये एक लॉ बन गया है, कुछ अमेंडमेंट्स थे जो अब लॉ बन गए हैं। तो जितना कुछ आज तक किया गया है, भले साहित्य में हो, चाहे किसी भी कला में हो या सड़क में हो, जो भी लड़ाई हम लोगों ने आज तक लड़ी थी वो सब ख़त्म हो गई है, ख़राब हो गई है, धूमिल हो गई है। मैं आप सब लोगों से और साहित्य अकादमी के इस मंच से सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहती हूं कि हम सब इंसान हैं। कृपया ऐसे बिल पास मत कीजिए जिसमें कि आप इस बात को ही भूल जाए कि ट्रांसजेंडर लोग भी इंसान होते हैं। सरकार ने इतना घटिया और इतना बचकाना काम किया है, मैं पुरजोर विरोध करती हूँ इस मंच से। और सचमुच में ये भारतीय इतिहास में अब तक की किसी भी सरकार, किसी भी चुनी हुई सरकार के द्वारा लिया गया सबसे गंदा और वाहियात बिल है, बहुत वाहियात, जिसमें शेम, जिसमें हमारी शिनाख्त को ही मिटा दिया है। मैं लिखती रही, मेरी बहनें लिखती रही, मेरे भाई लिखते रहे, लेकिन क्या फ़ायदा? सरकार ने कुछ ऐसा लिखा और सब लिखावट पे पानी फेर दिया। मैं जिंदा हूँ, सरकार को मैं चाहती हूँ देखें आंखें खोल के कि हम जिंदा हैं, हम इंसान हैं, हम आप जैसे हैं। हम अपने बेसिक राइट्स आपसे मांग रहे हैं, रोटी पानी कपड़ा सबको चाहिए भाई, हम भी वही मांग रहे हैं, हमें कुछ और एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। लेकिन एटलीस्ट हमारे मौलिक अधिकार, हमारा अपना जो
अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आप वो हमसे ना छीनें। सरकार ने बहुत गलत फैसला किया है। आप सब लोग भी कृपया अगर सरकार से जुड़े हुए हैं तो बात पहुंचाइए वहाँ तक कि इस बिल को वापस ले लिया जाए। धन्यवाद। Thank you, Sanjana. That was a heartwarming and not just heartwarming, but it was really an emotional speech, along with your wonderful recital of poetry, both in English as well as in Tamil. Sorry, Hindi. Okay. And next, I'm going to invite Dibijoti Sharmaji. And for those of you, our host has given an introduction. Beyond that, there is actually more, of course. So I would like Dibijoti to introduce yourself and then come up with some of your writings, which would inspire our audience as well as make all of us think about our future and your literary marvels. After this wonderful talks from Kalki and from Sanjana, I don't have much to say because I 110% agree with each and every word both of them have spoken. So, but I have written down something, so I'll just read it first and then see how it goes. First, thank you to Sahitya Academy for the invite and for organizing a special session on LGBTQ literature. At the same time, we must mention the elephant in the room, which Sanjana has already mentioned, and registered our disagreement against the 2026 Transgender Persons Amendment Bill. This new law robs us of the agency of our self-identification, and it is a hard blow to India's right for queer rights, India's fight for queer rights. And I agree with what you said, Sanjana, and I support your voice. Literature isn't devoid of politics. In fact, politics fuels literature, especially the literature that belongs to minority groups. The LGBTQI umbrella includes a myriad of identities. Sanjana and Kalki have spoken about transgender identities, so my whatever I'm going to talk about, I thought that instead of talking about literature in general, I should give you a reading guide. So I will mostly mention a couple of books that everyone should read, which will give an idea about what's happening in the community as a whole. Writing on this topic about LGBT writing in 1999, I had bemoaned the fact that India doesn't have an LGBT